हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर इम्पोर्टेंट पॉइजन नोट सीरीज, जहां हम फॉरेंसिक मेडिसिन के हर टॉपिक को एग्जाम ओरिएंटेड और कंसेप्ट क्लियर बनाते हैं। टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट द करोसिव पॉइजन्स, वो पॉइजन जो कांटेक्ट में आते ही सर्फ को फिक्स, डिस्ट्रॉय और इरोड कर देता है। कोरोसिव्स अटैक्स टिश्यू डायरेक्टली और कुछ ऑर्गेनिक एसिड जैसे ऑक्सैलिक एसिड और कार्बोलिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में कोरोसिव्स की तरह काम करते हैं। इवन सर्टन मेटेलिक सॉल्ट जैसे पोटेशियम साइनाइड, फेरिक क्लोराइड, क्रोमेट्स भी कोरोसिव इफेक्ट दिखाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ कोरोसिव्स। कोरोसिव्स को ब्रॉडली 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट, strong acid included inorganic acid and organic acid. Inorganic acids are sulfuric, hydrochloric, nitric acid. Organic acids are carbolic, oxalic and acetyl salicylic acid. Second category, acid like corrosives: dimethyl sulfate, diethyl sulfate, ozone, sulfur dioxide. Third is alkalis: sodium hydroxide, potassium hydroxide, ammonium, sodium and potassium carbonate. Phosphates such as polyphosphates. Now let's understand how corrosive poisons actually work inside the body. ये poisons mainly local destructive action दिखाते हैं. In concentrated form, they cause severe tissue corrosion and destruction. इसके अलावा corrosive poisons टिश्यू से वाटर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, हेमोग्लोबिन को हेमेटिन में कन्वर्ट करते हैं एंड प्रोटीन का प्रेसिपिटेशन करके कोएगुलेशन नेक्रोसिस करते हैं। कोरोसिव पॉइजन्स से ईओएसोफेगस रिलेटिवली रेजिस्टेंट होता है, बट स्टमक में पाइलोरिक रीजन में नेक्रोसिस हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन मेनली 3 वीक्स से 3 मंथ में डेवलप हो सकता है। कोरोसिव पॉइजन्स डाइल्यूट फॉर्म में इरिटेंट स्टिमुलेंट जैसे एक्ट करता है। लेट्स नाउ अंडरस्टैंड द जनरल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल ऑफ द कोरोसिव पॉइजनिंग, जो कि डॉक्टर के लिए इमरजेंसी सिचुएशन में बहुत क्रूशियल होता है। फर्स्ट इज स्टमक वॉश। सेकेंड इज वोमिटिंग शुड नॉट बी फोर्स्ड, क्योंकि ये फूड पाइप को और ज़्यादा डैमेज कर सकता है। थर्ड इज द फर्स्ट गोल टू डाइल्यूट द पॉइजन। पॉइजन डाइल्यूशन के लिए हम कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल यूज़ कर सकते हैं। अगर ये अवेलेबल ना हो तो मिल्क, एग वाइट, लाइम वाटर, वेजिटेबल ऑयल या सोप वाटर, और उसके बाद बियरली वाटर और ऑलिव ऑयल। फोर्थ इज बिस्मथ सब कार्बोनेट 30 ग्राम्स दिया जाता है टू कोट एंड प्रोटेक्ट द स्टमक लाइनिंग। फॉर पेन रिलीफ स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक दिए जाते हैं लाइक मॉर्फिन और मेपेरिडिन। टू ट्रीट द केमिकल डैमेज 10 ml ऑफ 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट IV दिया जाता है। इफ़ देर इज़ अ मेजर ब्लड लॉस, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर थ्रोट में स्वेलिंग से ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही हो, देन ट्रैकेस्टोमी इज परफॉर्म। ऑक्सीजन और आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इज गिवन एज नीडेड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिया जाता है टू प्रिवेंट स्कारिंग और नैरोइंग ऑफ द फूड पाइप। टू स्टॉप स्ट्रिंचर, एक स्पेशल ट्यूब जिसे बोगी कहते हैं, मर्क्यूरी से फील्ड डेली फूड पाइप में पास की जाती है। स्किन बर्न होने पर अफेक्टेड एरिया को पानी से धोया जाता है और सोडियम बाइकार्बोनेट पेस्ट अप्लाई किए जाते हैं। अगर एसिड्स आइज में चली जाए तो ठंडे और स्वच्छ पानी से 10 से 15 मिनट धोने पर। वार्निंग: अवॉइड गिविंग स्ट्रॉन्ग अल्कलीज लाइक सोडियम और पोटेशियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। ये गैस प्रोड्यूस करते हैं जो स्टमक रप्चर का रिस्क बढ़ाते हैं। पॉसिबल कॉज ऑफ डेथ इन कोरोसिव पॉइजनिंग: विद इन फ्यू आवर्स डेथ हो सकती है ड्यू टू शॉक, स्पाज्म और ग्लोटिसिडिमा। विद इन 24 आवर अ होल इन स्टमक कैन कॉज पेरिटोनाइटिस एंड डेथ ड्यू टू शॉक। विद इन फर्स्ट वीक पॉइजन के इफेक्ट से सेप्टिक एब्जॉर्प्शन हो सकता है, लीडिंग टू इन्फेक्शन इन द ब्लड स्ट्रीम। After months or years, patient may die from malnutrition, weakness or severe narrowing of food pipe. Now we will focusing on one of the most commonly used corrosive poisons, sulphuric acid, also known as olive or vitriol. Properties of sulphuric acid: sulphuric acid can be divided into 5 different groups. Pure sulphuric acid, it is colorless, doesn't produce fumes, but causes shearing and blackening of skin in contact. Commercial sulphuric acid, dark brown in color due to impurities like lead sulfate or arsenic. H2SO7, brown, oily, fuming and used in indigo dye preparation. Sulfate of indigo, prepared by mixing 1 part of indigo and 10 parts of H2SO7. Common uses: manufacturing chlorine gas, dissolving metals, clearing drains, medicines and even removing lime scale.
Signs and symptoms of poisoning. Let's now look at the signs and symptoms of sulfuric acid poisoning. Symptoms appear immediately after swallowing. Severe burning pain in mouth, throat and stomach. Acid with saliva drips from lips, burn skin, turn it brown or black. Vomiting of blood, mucus and tissue inside the mouth. Blackened, swallow, tongue, excessive salivation and choking. Teeth become chalky white, lips swallow and discolored. Painful swallowing, intense thirst, vomiting even after drinking. Hoarseness of voice, nausea breathing due to throat swelling. Difficulty in breathing, choking or lung damage. Constipation, painful urination, little or no urine. Shock sign, cold skin, low BP, fast weak pulse. Mind remain clear till death. In severe cases, convulsions, weak breathing, death in 12 to 24 hours. Later complication, peritonitis, chest infection, strictures, skin burns, deep, leathery black, heal slowly with scar. Autopsy finding. Postmortem finding depend on dose, concentration and survival time. External autopsy finding. Burns on chin, neck, chest, blacky leathery, lips, mouth, corroded, excoriated, initially grey then black. Teeth appear chalky. If taken by spoon, lips may be spared. Internal autopsy finding. Esophagus, inflamed, bleeding, rare perforation. Stomach, black, swollen, soft mucosa, easily torn. Peritoneum, black fluid with blood if stomach burst. Duodenum, show irritation. Liver, kidneys, toxic swelling, fatty changes. Larynx and trachea, inflamed, corroded. Delayed death, show esophageal narrowing. Organs in chest and abdomen appears black if acid leaks. Diagnosis. For diagnosis, blood tests show hemoconcentration, X-ray of lung, patchy appearance if acid vapor inhaled. Chemical test, sulfuric acid plus barium chloride. White precipitate, it also chars organic matters. Medical legal aspects. Now let's see how sulfuric acid is important legally. First, accidental poisoning, mistaken as glycerin, castor oil. Second is suicide, common due to easy access. Third is rarely used in homicide. Fourth, used in illegal abortion. Fifth, vitriolage, acid attacks, causes grievous injuries. Sixth is sometimes thrown on private part due to jealousy or revenge. Treatment of external acid burns. For external acid burns, wash with plenty of water or soap. Apply magnesium oxide or carbonate paste. Dress with tannic acid jelly, soframycin or penicillium gauze. Burns, wash eyes with water for 10 to 15 minutes. Irrigate with sodium bicarbonate solution. Use custard olive oil drops. For ulcer, use atropine, steroid, antibiotics. Legal injury notes. According to the law, blindness, grievous injury. Scarring, grievous injury. Acid attack, dangerous injuries. These have strong legal consequences under the IPC section 326A. This completes the episode on introduction of corrosive poisons and first poison of corrosives, that is sulfuric acid poisoning. Exam focus, detailed and simplified just for you. Don't forget to like, share and subscribe to our channel for more powerful videos in our important poison note series. Stay tuned with Medicopoint.